Hello, 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 hello. Am I loud and clear to everyone? Kindly tell me in the chat box, please. Yes, I'm live. Am I loud and clear? And I'm going to take a very wonderful session today. Yes, Sai Niket. Thank you so much. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good to go. Okay. So बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर G20 पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या सवाल बनते हैं, और थोड़ा सा बता दीजिए। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फटाफट से बताइए कि आपको सही से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। राम राम भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए, टेल मी समथिंग अबाउट यू। हाउ अबाउट यू? हाउ आर यू डूइंग? आर यू प्रैक्टिसिंग ओवर द मिरर continuously? Okay. Okay, 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 okay. Let me start. So, from which batch you are? Hi, amazing Nirupma, Nagasena, RJ, Usha, Sarat, RJ, Lakshya, Sai. Very, very good. Okay. So today I'm going to give you. So first of all, those who are new to this session, please subscribe our Telegram channel, which is IB exam @IB exam. Okay. And I have uploaded many PDF, many quizzes there. ओके, सो कल मैंने यहाँ पे कुछ क्विज भी डाली थी, जिसके अंदर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने 257 लोगों ने पार्ट लिया और 950 लोगों ने इसको देखा, और इसी तरीके से ये 274 लोगों ने इसको क्लिक किया और 967 लोगों ने देखा। तो इस तरह की चीजें आप करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। डेट कब तक आएगी सर? उम्मीद है 15 तक आनी चाहिए। ओके, उसके बाद हमने पीडीएफ, 2 पीडीएफ दी है। फ्री पीडीएफ नंबर 1 ये हमने कल दी थी, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से। और ऐसे ही पीडीएफ नंबर 2 दी है हमने, और इन दोनों पीडीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन 1+2 पीडीएफ के बाद कुछ सवाल और बनते हैं, जो आज मैं इस लाइव वीडियो के अंदर आपको करवाने जा रहा हूँ। सो आई विल बी शेयरिंग द एडिशनल क्वेश्चन in this session. Okay. Contender, Rainbow, Dark Horse, good evening, Janet. Okay. So question number 1 is, what do you know about a G20 meeting hosted in Delhi recently? This is the simple question to be asked to any students from any SIB. Okay. So kindly share this video to the person who is very needy about such questions, please. And please share this video in those Telegram groups which are related to your SIB. Okay, please. Okay, who will give me the answer? Please tell me the answer. Who will give me the answer? Okay, so the 2023 G20 New Delhi Summit
was the 18th meeting of G20, group of 20. And now it has become G21. Why it has become G21? Please give me the reason. And it was the 18th meeting. Okay. It was held in Bharata Mandapam International Exhibition Convention Center. It is in Pragati Maidan, New Delhi, and the venue is called Bharata Mandapam. Okay. It was 18th meeting. Yes, very good. New Delhi on 9 and 10th of September. It was the first G20 summit held in India. So these are the basic information in this question you have to give. Okay. और यहाँ पे आपको अफ्रीका नहीं लिखना है, अफ्रीकन यूनियन लिखना है, और यूनियन से पहले द का इस्तेमाल होता है, तो द अफ्रीकन यूनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा G21, जो 21st नेशन है. ठीक है. सिद्धू करालगी, निरुपमा, हिमांशु, स्किलपीडिया, वेरी गुड. Vasudhaiva Kutumbakam was the theme. Yes, we will come to that question also. And I have also posted. So how many of you have read the PDF number, free PDF number 1 and free PDF number 2? How many of you have read the free PDF number 1 and free PDF number 2? Please tell me. G20 is a group of 19 countries and 1 European Union formed in September 1999. Very, very good. Very, very good. One Earth, one family, one future. It is also called Vasudhaiva Kutumbakam. Most successful G20 meeting in the history of G20. Very good, Lakshay. शाबाश. आप में से कितने लोगों ने पब्लिक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दी गई पीडीएफ नंबर 1, पीडीएफ नंबर 2 जो G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस की है, उसमें 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारी पढ़ ली या नहीं? अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू इंडिया एक्सचेंजिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी विद इंडोनेशिया एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट द शेड्यूलिंग ऑफ द G20 समिट? G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडोनेशिया के साथ एक्सचेंज की थी, वो क्यों की गई थी और इसका G20 समिट के शेड्यूल पर क्या प्रभाव पड़ा था? प्लीज राइट डन और नॉट डन, whether you have read out the whole free PDF 1 and 2 regarding G20. Very good. So India was originally set to host the G20 summit in 2022. इंडिया में G22 2022 में ही होना था, but due to a request from Indonesia, India exchanged its presidency with Indonesia, allowing Indonesia to host the G20 summit in 2022, while India would host it in 2023, just in 75th anniversary of Indian independence. This decision was influenced by Indonesia's chairmanship of the Association of Southeast Asian Nation ASEAN in 2023. Okay. Every nation prays about G20 meeting. Now Brazil says that how we compete India. Hi Shubham Sehgal, how? So who will be the next host for G20? So India assumed the G20 presidency on December 1, 2022 with Prime Minister Narendra Modi as the chair. The G20 New Delhi summit is scheduled for the third quarter of 2023. This presidency was passed on from Indonesia, which held it in 2022. Prime Minister Modi later handed over the G20 presidency to Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, and India will continue to hold this position until November 30, 2023. और यहाँ पर मोदी जी ने बोला है कि नवंबर में हम एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे. इन नवंबर वी विल डू अ वर्चुअल मीटिंग. Okay. Are you getting everything? Is it okay from my side? Is the connection okay?
Okay, question number 4. Question number 4 is important question. How does the G20's evolving agenda under India's presidency reflect a commitment to addressing the challenges faced by the global south and promoting sustainable development on a global scale? Are these questions relevant for interview as well as for your general knowledge? Kindly comment it in the chat box, please. My simple target is 500 plus selection, and I think you all are on the way of that. So the G20 India presidency has identified 6 agenda priorities for the G20 dialogue in 2023. इंडिया की अध्यक्षता में G20 के अंदर 6 एजेंडा को प्रायोरिटी पर रखा गया है. These priorities include issues related to green development पहला है, climate finance and life दूसरा है, achieving accelerated, inclusive and resilient growth तीसरा है, sustainable development goal फोर्थ है, addressing technological transformation and digital public infrastructure ये पांचवा है, और reforming multilateral institutions for 21st century and promoting women-led development. तो ये आपके पास ये 6th वाला है. So Prime Minister Modi has expressed optimism about the evolving agenda focusing on human. सौरभ सिंह is asking, sir, आज डेट आने वाली थी. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सौरभ. डेट की स्पेकुलेशन थी कि G20 अगर ठीक ठाक हो जाता है और कुछ नए खतरे नहीं दिखाई देते हैं देश को, तो हो सकता है, आ सकती है. चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्सप्रेस्ड optimism about the evolving agenda focusing on human-centric development, addressing climate change, debt restructuring, and global cryptocurrency regulation. And I will be coming soon with cryptocurrency PDF, and I will upload it in public Telegram channel. And public Telegram channel is @IB exam. ये वाला चैनल है, इसको कर लेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड साइनिकेत. इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इसके अंदर आ गया, टेररिज्म भी आ गया. वेरी गुड. विद अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ. अब मैं आपका ध्यान कुछ खबरों पे दिलवाना चाहूंगा. इंडिया टुडे ने लिखा, G20 समिट इन अडॉप्टिंग दिल्ली डिक्लेरेशन, इट इज अ विक्ट्री फॉर रशिया, इंडिया एंड चाइना. It is a victory for India, but why it is a victory for Russia and China? Now, the wire is also saying that why China and Russia are the biggest winners of India G20 presidency. What is the case behind this? Can you please tell me the answer for such pieces of news? And also one more news, Modi disappointed that China, Russia skipped G20 summit, US says just 2 days before the meeting has held. Why this was so? Putin and Xi Jinping declined to attend meeting in blow to Prime Minister, and Biden official hail effort to boost US-India ties after meet. So this is the case for that. So why China and Russia are the biggest winners of India G20 presidency? The primary reason China and Russia benefit from India G20 presidency is due to the inclusion of African Union and the consensus statement which they can use to their advantage. This development comes amid the backdrop of a bipolar world with countries aligning either with the US or China. अब पिछले दिनों में या तो कुछ देश यूएस के साथ हो गए थे, कुछ चाइना के साथ हो गए थे. चाइना ने आना अच्छा नहीं समझा, लेकिन चाइना ने इनडायरेक्टली साथ देने की कोशिश की रशिया की, और रशिया और चाइना नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से एग्रेसिव नेशन के तौर पर उनका नाम डायरेक्टली मेंशन किया जाए. और यूक्रेन चाहता था कि किसी भी तरीके से रशिया के ऊपर बहुत सारी बातें की जाए. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इंडिया की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक विन भी हुई है. इट वाज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फ्रॉम इंडिया साइड.
तो थोड़ा सा इस तरीके से इस चीज को एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे। क्या मुझे ये वाली पीडीएफ शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ? इस पीडीएफ में बहुत काम की चीजें हैं। 40 पेज की पीडीएफ है। इट इज अ 40 पेज पीडीएफ और ये बहुत काम की पीडीएफ है, ट्रस्ट में। ओके, सो इसके बाद मेरे पास कुछ एथिकल डायलेमा के क्वेश्चंस हैं और एथिकल डायलेमा का पहला क्वेश्चन है, यू आर अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो and you receive information suggesting that a foreign power is planning to disrupt the G20 summit in India. However, the source of this information is not entirely credible. What steps would you take to assess the threat and decide on an appropriate course of action? Is this question relevant? Yes or no? क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरलाइज करने पढ़ाए गए हैं तरीके से? Please, if you are live with us, please do like the channel. Okay, एक लाइक का बटन दबा देंगे फटाफट से, और साथ में ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड सून वी विल बी अवेलेबल विद इंटरनल सिक्योरिटी सेशंस, इंटरनल इन्फोग्राफिक बेस्ड सेशन लेंगे हम इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसमें सब कुछ हम ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। कीप कमेंटिंग प्लीज, व्हाट इज योर आंसर? सो एज अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, I would follow a systematic process to assess the credibility of the threat and determine an appropriate course of action. First of all, I will do the source verification. Then I will inform the person existing intelligence report or data. Then I will do the intelligence analysis. Then I will do the external validation. I will check the historical patterns. Then on the basis of collective assessment of the information and credibility, I will categorize the threat. Then I will do some risk mitigation, continuous monitoring, reporting and decision making, communication and preparedness, and ultimately the decision on how to address the threat should be guided by a combination of credible intelligence, the potential impact of the threat, and the need to ensure the security and smooth functioning of the G20 summit. Now, come to the next question. Yes, Sahil, very good. Come to the next second question. This is a pragmatic question, and this is very, very important for Delhi SIB. Delhi SIB. As an intelligence officer, you receive information that the government has initiated a mass demolition drive against homeless shelters and slum neighborhoods in New Delhi ahead of the G20 summit. How would you react when faced with intelligence suggesting that government actions which may displace marginalized residents are occurring in preparation for the summit? What steps would you take to address this dilemma while considering both security concerns and ethical implications? Again, a very important question, ethical dilemma question है, और इसको जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करो कि आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और आपको पता लगता है कि सरकार जो है वो जितने भी बेघर लोग हैं उनके घरों को डिमोलिश कर रही है, जो आसपास में झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। और क्यों कर रही है वो? क्योंकि G20 की समिट को थोड़ा साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करनी है। अगर वो इस तरह के काम करेगी तो फिर आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते अपना अगर एथिकल कुछ डायलेमा क्रिएट हुई है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करने की कोशिश करोगे? शेरपा जो है ना, कन्वीनर ऑफ द कन्वीनर को बोलते हैं शेरपा। ये हर बार होता था वैसे तो ये टर्म, लेकिन इस बार इसको बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। So the G20 Sherpa for 2023 is a high-ranking official designated by a G20 member country to represent their leader
typically the head of the state or the government, in preparation for the annual G20 Leaders Summit. Okay, so जो प्रिपरेशन की पूरी चीजें देखेगा, कंडक्ट कराएगा, मैनेजमेंट देखेगा, उसको बोलेंगे शेरपा। ओके, अब ये होमवर्क के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। The government has allocated a significant budget and deployed 1,30,000 security personnel for the G20 events, including police officers. Yes, Amitabh Kant is the Sherpa for G20, sir. Yes. So how do you assess the ethical implication of allocating such substantial resources and personnel for a single event like the G20, especially considering the potential diversion of resources from other critical areas? How would you balance security needs with broader societal needs? चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? देखो, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है, एथिकल डायलेमा का क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बिजनेसेस in the lead up to the G20 summit, the government orders the closure of all school, offices, marketplace, restaurant and non-food shops in Delhi for 3 days. So when confronted with such orders that affect the daily lives and livelihoods of citizens, how do you evaluate the ethical dimension of these restrictions? What actions or recommendation would you propose to address the balance between security measure and public welfare? देखो जी, क्या हुआ, G20 समिट के अंदर सरकार ने ऑर्डर दे दिए कि सारे के सारे स्कूल, कॉलेज, मार्केट प्लेस, रेस्टोरेंट और जितनी भी गैर भोजन वाली जो दुकानें हैं वो 3 दिन के लिए दिल्ली में बंद रहेगी। जैसे ही आपको इस बारे में पता लगा, इस ऑर्डर के बारे में, तो आपको पता लगा कि दैनिक जीवन और दिनचर्या और लोगों की जो आम आय का जो साधन है वो कैसे चलेगा इस तरह की रेस्ट्रिक्शन के बाद, इस तरह के बंधन के बाद। तो आप अगर इस जगह पे होते तो किस तरह के एक्शन या रिकमेंडेशन को सरकार के सामने सुझाव देने की कोशिश करते ताकि लोगों का जन कल्याण भी बरकरार रहे और उस समय सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त किए गए हैं वह भी ठीक ठाक रहे। ओके, अनिल कुमार, हम आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं, जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत देते रहें। किस तरह का नेचर है, आप थोड़ा सा बताइए, कंटेंट के बारे में आपको कैसा लगता है अपना कंटेंट? क्वेश्चन नंबर 5, disputed report on eviction. So there is a conflicting reports exist regarding the reasons for demolition and eviction in Delhi. दिल्ली के अंदर जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं या कुछ झुग्गियां गिराई जा रही है, उसमें कुछ conflicting reports आ रही है कि हुआ है या नहीं हुआ है। While some sources claim they are related to G20 summit, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये G20 की वजह से हो रहा है। The government asserts they are in line with court order. लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर पर, आदेश पर हो रहा है। अब एथिकल क्वेश्चन बनता है कि इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या पब्लिक परसेप्शन और ट्रस्ट को प्रभावित करती है? That may impact public perception and trust. How would you navigate this situation ethically? What steps would you take to verify the accuracy of the reports and communicate transparently with the public? Easy question है, हो सकता है? अरे बताओ। Question number 6, media reporting versus government statements. अब खबर ये थी कि इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स लाइक CNN, Reuters and Washington Post report on the demolition drives and eviction, potentially tarnishing India's image ahead of the G20 summit. The government's press agency rejects these claims. अब विदेश की जो मीडिया वो कह रही है सरकार ने घर गिराए हैं और देश की जो सरकारी प्रेस एजेंसी वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब एथिकल क्वेश्चन बनता है, एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, हाउ वुड यू एड्रेस द एथिकल चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट
and reputation with the need for transparency and accountability in government actions. What actions would you take to manage this dilemma and ensure accurate information reaches the public? Now, 10 last 4 questions I am giving you. During the G20 summit, you have evidence that a member country is engaged in espionage activities targeting India. However, revealing this information may strain diplomatic relation. How would you handle this ethical dilemma? As a part of your role, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि G20 समिट में आपको खबर मिली कि कोई एक सदस्य देश ऐसा है जो इंडिया के खिलाफ जासूसी कर रहा है, लेकिन इस तरह की खबरों को उद्घाटित करना आपके कूटनीतिक जो रिश्ते हैं उसको खराब कर देगा। इस तरह की एथिकल डायलेमा के सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, as part of your role in the intelligence bureau, you come across information about a potential terrorist threat to the G20 summit. आपको लग रहा है कि G20 समिट में कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है और ये इंफॉर्मेशन एक टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर इसको दे दिया तो पैनिक भी मच जाएगा। मतलब इसको समय पे देना भी जरूरी है, पर समय पे दे दिया तो पैनिक हो जाएगा और हो सकता है G20 को कैंसिल करना पड़ता। हाउ डू यू बैलेंस द नीड फॉर सिक्योरिटी विद द पोटेंशियल फॉर पब्लिक अलार्म? मेरे को आप सब लोग प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर दीज क्वेश्चंस रेलेवेंट एंड इजी टू सॉल्व? प्लीज टेल मी, give your brief descriptive answer or the chat or the comment in the comment box. Question number 9, again a very important question. You have access to classified information that could significantly benefit India's negotiation position at the G20 summit. आपके पास एक ऐसी बिल्कुल खासम खास सूचना है जो भारत की नेगोशिएशन पोजीशन को G20 में बहुत अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। However, revealing this information may violate international agreement. लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिवील करना अंतरराष्ट्रीय समझौतों को वायलेट कर सकता है। How would you handle this situation ethically? During the G20 summit, you uncover evidence of corruption involving a high-ranking official from a member country. So एक भ्रष्टाचार का केस हो गया है। अब कैसे आप किसी पर आरोप लगाओगे? कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन तो खराब नहीं हो जाएंगे अगर करप्शन को एक्सपोज करोगे या कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे? वेरी गुड अंशु जी, लक्ष्य जी, साईं जी, थैंक यू सो मच. नाउ कम टू द जनरल क्वेश्चन. Shall I show? So what is the G20 and what is the primary purpose? The G20 or the group of 20 is an international forum comprising major economies from around the world. Its primary purpose is to provide a platform for member countries to discuss and coordinate on global economic issues, promote international financial stability, and foster cooperation on various policy matters. तो ये सवाल है कि G20 क्या है और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है. तो ये एक मेजर इकोनॉमी जो भी है वर्ल्ड की, उनके द्वारा बनाया गया एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि डिस्कस और कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल इश्यूज के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और पॉलिसी मैटर पर एक दूसरे को कोऑपरेट करता है. हाउ ऑफन डू G20 समिट्स टिपिकली टेक प्लेस? G20 समिट कितने दिन में होता है? तो G20 समिट आर हेल्ड एनुअली, bringing together leaders and representatives from member countries to engage in discussions and negotiations on pressing global challenges. अब आप सब लोगों ने क्या करना है, G20 हो या G21 हो, all countries और उसके अपने कैपिटल और वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट जो भी है उसका नाम याद करना है. So will you do? Say yes or no. Will you do? Okay, question number 3. Which countries are considered permanent members of the G20? The G20 consists of 19 members countries and the European Union. The permanent members include Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan,
Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom and the United States. कितने लोगों को ये 20 के 20 कंट्रीज याद हो गए हैं? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। इसको याद करने के तरीके के तौर पर देखो, ए बी सी एफ जी आई जे एम आर एस टी यू, ऐसे करके याद कर लो। देखो अब पहले दो ए है, ए से बन गया अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, फिर बी ए के ब्राजील, सी दो है, सी से कनाडा एंड चाइना, फिर एफ है फ्रांस, जी से जर्मनी, आई से इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, ओके, फिर जे से जापान, एम से मैक्सिको, आर से रशिया, एस से सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टी से टर्की, यू से यूके यानी कि ब्रिटेन, और यू से यूएस यानी कि अमेरिका। Question number 4. What are the main areas of focus for discussions at G20 summits? So G20 summits cover a wide range of topics including global economic growth, financial regulation, international trade, climate change, sustainable development, poverty reduction, and cooperation on global challenges such as health crisis and security issues. So how does the G20 differ from the G7? गुरुजी बेटी एसएससी एफसीआई में, ओ माय गॉड। ठीक है, ऐसे कर लोगे तो अच्छा। जी वाला ले लिया, यू दो बार आ गया, आर आ गया, ओके, जे आई आ गया, फिर बी ई टी आई आ गया, बी ई से क्या करोगे भाई? अच्छा, टी आई, टी से एक ले लिया, एस एस दो बार ले लिए, सी ले लिया, चलो ठीक है। ट्रिक तो अच्छी है, अच्छी है। So the G20 differs from the G7 in terms of its membership. The G7 or group of 7 comprises 7 major advanced economies. What are the 7 major advanced economies included in a group of 7? Please tell me in the chat box. While the G20 includes a broader group of major economies from different regions of the world. What role does the host country play in organizing the G20 summit? जो होस्ट कंट्री होता है वो G20 समिट कराने में क्या रोल प्ले करता है? The host country of the G20 summit plays a pivotal role in setting the agenda, coordinating meetings, providing logistical support, and ensuring the security of the event. They also lead discussion and negotiation during their presidency. नोट कर रहे हो? How does the G20 address global economic challenges and financial stability? हाँ, कॉन्टिनेंट वाइज कर लोगे तो और इजी हो जाएगा, टेक्निकल भी है वो थोड़ा सा। How does the G20 address global economic challenges and financial stability? And what is the significance of the G20's commitment to promoting sustainable development? उसके अलावा how does the G20 address issue related to trade and international cooperation? Or what initiatives has the G20 launched to combat climate change and promote environmental sustainability? तो इस तरह से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि मैं आपको अपने पीडीएफ के ऊपर दे दूंगा। सो यू ऑल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। G7 कंट्री, GF जूस, वेरी गुड साइनिकेट। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक बार मेरे को लिख के, और अगर आपका जो भी डाउट है वो मेल करेंगे, और वो मेल आईडी है मेरी beatinterview@gmail.com, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलती जाए।
OMG निकलवाएगा सर का GF जूस लमाओ। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से एक बार कुछ देख लेते हैं। और कितने लोग हैं जो बहुत दिन से मिले नहीं है, बात नहीं की है। तो हमने शुरू की थी बात आपकी कि किस तरीके से आज सवाल क्या बनता है। तो हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ सीरीज ऑन यूट्यूब। whenever any current news or current event or incident happen in our country, we will be in front of you on our YouTube channel with the series called in Hindi सवाल क्या बनता है, or in English we will be having series what becomes the question. What becomes the question? So how is my proposal? Please approve my proposal so that I must feel। ये मैं आपको पूरा का पूरा PDF दे दूंगा, जिस PDF में से आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर कुछ बेसिक सवाल थे, कुछ जियोपॉलिटिकल के सवाल थे, कुछ एथिकल डायलेमा के सवाल थे, और इन सारे सवालों को आपने लेकर चलना है। बहुत ही जल्द हम आपके सामने करंट न्यूज जो भी होगी उस पर बेसिक न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी न्यूज या फिर एथिकल डायलेमा बेस्ड न्यूज को लेकर हम आएंगे। और साई निकेत कह रहे हैं कि सर वी नीड ए टाउन हॉल मीटिंग। यस, आई एम कमिंग विद टाउन हॉल मीटिंग वेरी सून, 1 day 1 सेशन। तो इस तरीके से चीजें करेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं तो वो लोग अपने 1885 सब्सक्राइबर जो हैं इनकी संख्या को बढ़ाएं। IB एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को लाइक करें ताकि हमारे टारगेट 500 प्लस सिलेक्शन की तरफ आप भी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। इस तरह के सवाल जो मुझे, अच्छा मेरे को ना एक जरूरत पड़ती है कि आप में से कितने लोग कंटेंट मेकिंग में बहुत अच्छे हैं या फिर क्वेश्चन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो मेरे से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। इफ यू आर गुड एट मेकिंग कंटेंट और क्रिएटिंग क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, then do connect me as soon as possible. It will boost me, it will give me more supplies for homework। ठीक है, 2.9 तो यूट्यूब पे है ना लक्ष्य। और ये PDF किस किसने देख ली है? फ्री PDF 1 एंड फ्री PDF 2। कितने लोगों ने फ्री PDF देख ली है? तो ये फ्री वाली PDF प्लीज डू check the free PDF and do learn the free PDF because in the mock itself we are coming with, okay। So now I have one announcement for you. Shall I show? Shall I do that announcement? Okay, so we are coming with mock interview. We will be coming with 2 mock, 3 mock or 5 mock. So there will be 3 schemes for 2 mock, for 3 mock or for 5 mock. Okay, so those who want to do any 1 mock, we will do it also. So there must be some cost for incurring this. I will post the whole scheme in the Telegram channel, and whenever you are being mock interviewed for this, you will be given the whole personality chart, how you have to work on your personality or in which kind of question. And also whenever you take the 5 mock subscription, you will be given the membership for premium Telegram
channel. This must be offline mode. Sorry, this must be online mode only. And after a week, we are going to announce our offline program also. After a week, we are, or not after a week, just after 2-3 days, we are going to announce our. So this is all from my side. Thank you so much. If you have anything to say or ask, please do comment in the chat box. Thank you so much. Bye-bye.